मैं खड़ा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि संदीप सोपरकर जैसे एक बहुत ही जाने माने कोरियोग्राफर आज हमारे साथ है, तो इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने तो जी। और इंद्रानी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया ये पूरा कार्यक्रम करके। और दीदी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और हमारा इंद्रानी मुखर्जी एंटरप्राइज को पूरा सपोर्ट है। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, वी आर विद यू। एंड रतन, आप साथ में हो तो क्या बात है। जी, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। And it's really inspiring. Yeah. Thank you so much. Thank you for being here, and thank you for this wonderful venue again. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for being here. What an honor it is to always share the stage with you. It's an honor to be there whenever Sandip ji is, and Yes. it's always a pleasure to become a part of whatever he does. Yes. Because it's always unique. And today your students are going to be performing with him. Yes. So what would you like to say to them? So basically, Sandip ji ke saath, I think it's almost 5-6 years that we have been collaborating for Indian Dance Week, India Dance Week, since now 5-6 years. And what I've always appreciated, you know, dance बहुत अच्छा है, dancers बहुत अच्छे होते हैं, मगर एक दूसरे को support करने में बहुत कम साथ में खड़े रहते हैं. Sandip ji is one of them who does not sort of discriminate. Oh, आप classical कर रहे हो, oh, आप ये, nothing doing. And that's the magnanimity of Sandip ji, which has always been very special to all of us. He's of course a part of our family, Nalanda Parivar, when I say. So it is always a pleasure to be here, and always the purpose of having this has been special. Like we had acid attack victims we had in between. Then we had also PETA for animals. So every time the purpose is unique, and today also it is a very special event. And so it's a pleasure to be a part of whatever Sandip ji does, because it is with a lot of thought and a lot of gratitude to you and to everyone. Thank you so much. Thank you so much. It's such a pleasure to have you here. Without your support, of course, this afternoon would not be possible. You know, you're an author, you had a best-selling book, she is a businesswoman. I mean, I can go on and on and on. And a dancer now, a performer. And of course, we are all waiting for your next performance. Hopefully, very soon we get to see you in Mumbai performing. But what was the thought behind lending your support for International Dance Day? Actually, you know, dance has acted as a big healer in my life, and I'm going to talk a little bit more about it in a bit. But yeah, so that is what I decided. I mean, dance is my passion now. You know, that's the love of my life, as you can say. And I think this was a great opportunity to include everybody in this. And I'm going to talk more about this phrase, everybody, why it is spelled separately. So, anyway, first, thank you, friends. You know, I can't see all of you, but there you go. And performers, mentors, members of the press, and every soul who has carved out time on a busy Monday to be here with us. Thank you for breathing with me. And with this first shared breath, we've started a dance together. I found my movement back on a December morning in 2022 when the world still felt very walled-in. That was when Dr. Sandip Soparrkar walked into my life and into my home. My spirit had grown brittle at that point, but in the first lesson, the first plie, whispered a lesson that my mind had forgotten, that the body can bend without breaking. Every step, every stretch coaxed resilience out of hiding until it started beating like a second heartbeat.
dance has not erased my scars, but it taught them to glow. Tomorrow is International Dance Day, a date marked by the world with spotlights and perfect arabesques. But in this honest little theatre today, we are here for a deeper celebration. Behind me, 9 groups await artists who live with cerebral palsy, with vision impairment, acid attack aftermath survivors, limb difference, deafness, Parkinson's, and life on wheelchair. They have all rehearsed 2-minute performances with shimmering determination. Every distinct journey, but one rhythm. And before we begin, allow me to just mention a few invisible obstacles these people face every single day. The dance class with no ramps, the audition that ends with the word disability, the polite suggestion to sit this out. If my hurdle was a headline, theirs is a locked day, and yet, they keep turning the key. I will quickly sketch 3 portraits. An acid attack survivor who avoided mirrors for months, now spins under a mirror ball. Each rotation, a declaration, I am more than what happened to me. A lady with Parkinson's whose tremors betrayed her at the breakfast table. She has learned to fold those tremors into tempo, and today her arms ripple like tabla beats. A very young, beautiful lady on a wheelchair who refused to allow the distance between her legs and the floor to measure her. Instead of satin, she pirouettes on rubber. Watch her, she's going to perform a bit. So these are not stories of sympathy. They are blueprints of resilience and possibility. They remind us that when our children go to school, they need to learn sign language along with the nursery rhymes, because rhythm exists both in sound and in silence. Today, I wish to thank every single soul who has made this afternoon possible. To the performers, you lend us courage, and for that, we are richer. To the families and the caregivers, you make practice possible. Your silent support gives us this opportunity to bring all these wonderful artists today to perform. And we are thankful for that. To Dr. Sandip Soparrkar, my mentor, my friend, thank you for choreographing compassion. And thank you for reminding me that healing can wear sequins. I would also like to take this opportunity to thank the members of the press. I am truly, truly grateful that you have come here to carry this narrative beyond these walls. Please don't just write about this event. Write and talk about a movement where the society sees ability in the word disability. Your movement is our birthright, and it is not a luxury just for the able-bodied. I would once again, though Ratan has already thanked, but I would truly, truly, from the bottom of my heart, I'd like to thank Mr. Haresh Mehta
who's the president of the India Finance Council, Mr. Sampat Singh, there you are, yeah, who's partnered with us for this lovely, beautiful theatre. I'm in love with this theatre. And Dr. Umar Rele, principal of Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya. Thank you so much for lending us your support. Yeah. And today we are going to start this afternoon with the Saraswati Vandana, after which Dr. Sandip Soparrkar will take over the stage and will be the Sutradhar for the afternoon, and he will weave each performance with dance, story and purpose. And before we step into this shared experience, I'd just like to leave all of you with thought that if we clear the floor of prejudice, each soul, each human's heart can beat and dance together. The rhythm today is not mine alone, it belongs to all of us. Enjoy the afternoon. And thank you once again for supporting us, for supporting these beautiful, wonderful, talented artists. Thank you so much. That's the power of your performance, always. I actually have had a little bit of viral, which is why please excuse my throat. But every year, sir, you've been doing this. Dance is for everybody. International Dance Day celebration. What do you have to say? Well, it is very simple. I love dancing and I think everybody should dance. So whenever I get an opportunity to bring it out to people, I do shows like these, but I truly believe the dance is for everybody and two types of bodies, yeah? I mean, it's truly incredible the way that you incorporate pause every year, and this year you have decided to bring in students with mixed abilities, as ma'am said before. What was the thought behind that? Every year I would normally choose one disability, one special ability, whatever you call it, on different causes, but I thought it's time that I bring everyone together, because dance is supposed to bring people together. So let's just do one show and bring everyone together. It's very simple thought behind it. So that's truly incredible, and thank you so much for doing this. Thank you so much for getting me here to host the show for you. It's always an honor to be on stage with you. And I will now let you take the stage, sir. Ladies and gentlemen, Dr. Sandip Soparrkar. कार्यक्रम की शुरुआत सांकेतिक भाषा में, साइन लैंग्वेज में हमारे राष्ट्रगान के साथ की। पर मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मानता हूं जो हमेशा से दिव्यांग लोगों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए बात करता आया है। 2008 में हमने डांस फॉर अ कॉज की शुरुआत की। उसे दुनिया का सबसे बड़ा मंच मिला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस का, जहां पे डांस, ड्रामा और म्यूजिक के माध्यम से हमने अपनी बात को आगे रखा। उसे देखने के लिए, सुनने के लिए, प्रशंसा करने के लिए बिल क्लिंटन, निकोलस सरकोजी जैसे दिग्गज लोग आए। इस बात को 16-17 साल हो गए और तब से लेकर आज तक हर वर्ष हम लोग अलग अलग बातों पर बात करते हैं, अलग मुद्दों पर बात करते हैं, उसको आगे लाने का प्रयास करते हैं। और आज मैं इंद्रानी जी को धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ करके इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप सभी मेहमानों के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल माय डियर प्रेस मेंबर्स, आप लोग हर साल हमारे कार्यक्रम में आते हैं। आई होप आपको हमारा ये कार्यक्रम आज फिर से पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जो तो जा सकते हैं आप लोग ताली। पर दिव्यांग लोग हमारे देश में PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। पर ये PWD है क्या? इसकी व्याख्या क्या है? एक्सप्लेनेशन क्या है? मेरे पास एक पेपर है, मैं उसमें पढ़ के सुनाना चाहूंगा ताकि मैं कोई शब्द ना भूल जाऊं और आप लोग हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा। According to the Rights of Persons with Disabilities Act 2016,
A person with disability is defined as someone who has long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment, which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. I'm sure आप लोग ऐसे काफी सारे people with disabilities को जानते हैं. आप लोग को बता सकता है किस तरह के disabilities को आप लोगों ने देखा है? Anybody here? चलिए, come on. Autism. You're in front. Parkinson's, okay. पीछे मीडिया वाले. Cerebral palsy. Cerebral palsy, okay. ऊपर parents. Blindness. और बताइए वहां पे acid attack, delayed learning abilities, okay. यहाँ से भी बोला. Okay, let me tell you, I was surprised by the way. There are 21 types of disabilities registered under the government in India. 21 disabilities, ladies and gentlemen. Blindness, low vision, leprosy cured persons, hearing impairment, deaf and hard of hearing, locomotor disabilities, dwarfism, intellectual disabilities, mental illness, autism spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities, which means more than any other one that I just told you, acid attack victims, and Parkinson's disease. I'm sure आप लोगों को ये 21 शायद नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. जब तक मैंने मेरे दूसरे बेटे को अडॉप्ट किया 2020 में, who is deaf and mute, and when I went to PWD to check all these things, तब मुझे पता चला कि 21 types of disabilities are there. और हमने बात की पार्किंसन डिजीज की, तो मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ बैठे मेरे सारे दोस्तों को जो आपके लिए डांस करेंगे. They are supposed to be under PWD for the Parkinson's disease. और इनकी खास बात मैं बताऊंगा, प्लीज लाइट दीजिए. इनमें से एक परफॉर्मर है जो मेरी मम्मी की स्कूल की फ्रेंड है, और उनके कारण यहाँ पर मेरे पेरेंट्स पुणे से आए हैं उनको देखने के लिए. सो प्लीज इनके लिए, सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार. PDMDB is an all-India charitable society working to improve the quality of life of people with Parkinson's and their caregivers. It was founded by Dr. B.S. Singla in the year 2001, and currently they have 70 plus support groups all over India. Please welcome on stage Dr. Riya Shah from Parkinson's Disease and Movement Disorder Society. Thank you, ma'am. Could I have a mic, please? Please say a few words about the performance, how easy or how difficult it is for you to work with them, and thank you so much for doing this. Thank you so much for this opportunity to call us here today. We are very glad, and that has really motivated the spirits of all our team members here. Thank you so much. So as you asked the question, like how difficult or how easy it is to make people with Parkinson's dance, let me tell you, it's not that difficult as you all see it. So dance, as Indrani ji said, has been helping and healing for her. Similarly, for people with Parkinson's, dance plays an wonderful and beautiful role to move them forward in their lives. So as you all know, like Parkinson's disease is a neurodegenerative disease, which is a progressive condition in which you see symptoms which are movement related and mood related.
So you all must have seen a few people having difficulties while performing, having difficulties come up. Few it is difficult to remember, but something is there in music and dance that just switches everything on and they forget about whatever difficulties that they are having, and everybody enjoys. I am sure you all saw the happiness on their face while they were dancing. Yes. I don't think anybody was stressed today. When I started at the G1 in 2013, it all came with my own experience of, facing an acid attack in 2006, which was 12 days after my wedding. And, being a postgraduate in management, I was not able to get a job. I was clueless how to get my treatment done, which doctor to follow, what to do and not. And then I realized that, I am among very few of them who have been very fortunate to have a supportive family who could afford best plastic surgeon in the country. And trust me, this is the best any plastic surgeon could have done to my face. Burn is something which destroys you, not from inside, but from outside as well. It is what, so much visible. It is a disability which is visible to everyone wherever you go. It's not a trauma of one day or few days, it's trauma for life. You have to face questions of people every day. Wherever you walk, people stop and ask you what has happened. And they feel pity for you. That's not what acid attack survivors they need. They need your empathy and they need your support. They need you to invite them, accept them for who they are, not for what has happened to them, right? And that's why I started at the G1, to provide that kind of support, be the bridge between doctor and the patient, be the support of those survivors who don't have people to support them, not even their own family. And yeah, it's been a long journey. With you as well, I remember, in 2013, we had spoken, and it's been a long journey. And thank you so much for always remembering us. And it's a great platform, and I hope you keep doing this because it gives, of course, a platform, but you don't know, it gives so much of courage to anyone who is performing here and telling her own story of courage. It's like something, you so boldly tell to the world that, I have come out of my trauma and I'm doing something out of myself. So thank you so much for doing this. Thank you so much, everyone, for, being part of it. Thank you so much.
एक्ट्स देखे, क्या क्या कहना चाहेंगे, कैसा मतलब कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, और कैसे आपने सोचा कि संदीप सर के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, और पूरे इस इवेंट के बारे में अगर कुछ शेयर करें, क्योंकि इंटरनेशनल डांस डे है कल के दिन जी। और ये सबके पास कल ही जो है पब्लिश होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली संदीप जी मेरे डांस गुरु है और हम ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त भी है। और जब हम बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि जब अपना इंद्रानी मुखर्जी एंटरप्राइज हमने लॉन्च किए हैं, तो पहला इवेंट हम क्या करें, तो उसमें हम लोग बात करते करते ये डांस हम लोग दोनों के लिए बहुत प्रिय है, इनके तजुर्बा बहुत है। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, हाँ बताते हैं, बट इनके एक्सपीरियंस बहुत है। 40 इयर्स से ही इज़ रूलिंग बॉलरूम डांसिंग इन इंडिया एंड बट यू नो ये जो हमने इनिशिएटिव लिए कि एक साथ हमको ये इंटरनेशनल डांस डे के लिए कुछ ऐसे आर्टिस्ट्स को हमें लाना चाहिए जिन्हें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी थे। तो हम बात करते करते तो संदीप जी ने उस टाइम में बताया कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे बहुत पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ट्रेन करते हैं, तो आप हम लोग ये कर सकते हैं क्या। सो इट वाज द रियली द मोस्ट ब्रिलियंट आइडिया एंड उसी टाइम से हम लोगों ने सोचे कि हम ये प्लान करेंगे। बहुत कम समय में इन्होंने सब कुछ तैयार किया और इसीलिए हम होप करते हैं कि आपने ये इन्जॉय किया है शो एंड दे आर फैंटास्टिक परफॉर्मर्स। और आप जो ये आज शो आपने कवर किया है, इसमें प्लीज़ आप सबको यही खाली रिक्वेस्ट कीजिए कि जो ऑडिटोरियम इवेंट्स है, आज आपने देखे जब इन लोग आए थे यहाँ स्टेप से उनको लेके आने पड़े, तो you know it should be friendly for all bodies. That is the thing, we said dance is for everybody. वो जो separate किया हमने body, तो ज़्यादा ऑडिटोरियम इवेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, accessible entrance, yes, जो अभी भी ये नहीं है इधर। So that is one part. एंड anyway, हम सोच रहे हैं कि आप आगे जाके सबको प्लेटफॉर्म देंगे और इन लोगों के बारे में भी, इन लोगों से भी इंटरव्यू कीजिए जो अपने आर्टिस्ट्स हैं, तो वी होप यू नो वी कैन कंटिन्यू डूइंग मोर ऑफ दीज शोज। संदीप सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा कोलैबोरेट करने का इंद्रानी मैम के साथ? हमने देखा है हर इंटरनेशनल डांस डे पे आप कुछ अलग करते हैं, इस साल मैम के साथ कोलैबोरेट किया, क्या कहना चाहेंगे सर? मुझसे काफ़ी समय से डांस सीख रही हैं इंद्रानी जी, एंड जो मैंने कहा इंटरनेशनल डांस डे आ रहा है, मुझे कुछ कार्यक्रम करना है, तो उन्होंने एक दिल खोल के बोला जो करना है तुम्हें करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ। एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि कोई आके ये बोले कि तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच टू द एंटरप्राइज, इंद्रानी मुखर्जी एंटरप्राइज की हमारे साथ जुड़े आप लोग, बिकॉज ये जो हमने आज शो किया ये काफ़ी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लोग अलग अलग प्रकार के शोज़ करते हैं और वहाँ पे पैसा लगाते हैं, वहाँ पे चीज़ें बोलते हैं, पर इस प्रकार के शो बहुत कम लोग करते हैं। तो आपने ये किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। एंड आप लोग सब, आई होप यू विल एंजॉय द शो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के दिव्यांग लोगों ने आके परफॉर्मेंस दिया एंड आपको दिखाया कि जो डांस होता है वो दिल से होता है। सर, इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर क्या मैसेज होगा जो हमारे भारत के देशवासी है सभी के लिए आपकी तरफ से? मैं तो यही बोलूँगा कि गोपाल दास इंद्र जी की कविता है, बहुत मेरी प्रिय है। उन्होंने कहा, दुख में नाचो सुख में नाचो, दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे, कौन रे जाने कब उड़ जाए सांसों की सोन चिड़ैया रे। सो आप लोग डांस करते रहिए हमेशा और खुश रहिए। डांस जो है लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो ये जो पुल है दिलों तक का, वो डांस के माध्यम से आता है। तो आप लोग बस खुशियाँ बांटिए और डांस के माध्यम से बांटिए। मैम, इंद्रानी मुखर्जी एंटरप्राइजेस और क्या-क्या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें। क्या आज सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये प्रोग्राम किया गया, बहुत कुछ करेंगे। आप लोगों से फिर से हम जुड़ेंगे, फिर से हम इनवाइट करेंगे वेरी सून। इन फैक्ट इन जून वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग, सो आपको उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज ये जो हमने ये कार्यक्रम किए, जो संदीप जी ने इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से ये कोरियोग्राफ किए हैं विथ सो मच ऑफ पैशन एंड इमोशन, आप खाली ये मैसेज
ये दीवारों के बाहर लेके जाइए कि हम सब भारतीय क्यों सबको we must see ability in the word disability. That is very important. Thank you so much. International Dance Day, I've always been associated with Sandip sir. Salo Sal, you've been a part of the events and you've seen me host it. Every year they take a cause, and this year they decided to take mixed abilities. So I felt very passionate about it, and I thought that I need to get behind it. And plus I was performing with the students of GAET, so it was very exciting and very fulfilling. ऐसे लग रहा है कि हाँ, you've done something good. So it was very fulfilling. परफॉर्मेंस का कैसा एक्सपीरियंस था? हमने देखा बहुत मस्ती कर रहे थे डांस। लास्ट मिनट भी था थोड़ा सा, तो नर्वस थे, एक्साइटेड थे? नर्वस नहीं, बहुत एक्साइटेड था। मैंने एक्चुअली 2 दिन उनके साथ बिताए बिकॉज दे ऑल हैव मिक्स्ड एबिलिटीज़ लाइक आई सेड बिफोर। तो उन्हें टाइम लगता है टू गेट यूज टू समबडी अराउंड देम। सो आई वेंट स्पेंड टाइम विद देम, थोड़ा बहुत रिहर्स किया, मस्ती की, उनको जाना, एंड देन वी केम एंड परफॉर्म। अब ये कोई इतना प्रोफेशनल पैरामीटर से आप इस परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। इट वाज जस्ट अ फन एक्ट एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच। कितने एक्साइटेड थी और क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? This was my 4th ballroom stage performance with Sandip sir under his mentorship, and first Bollywood song that I did. So I was really excited. We practiced a lot. Little bit of nervousness, but yeah, it was done. And how was your experience working with Sandip sir? Oh, he's like totally a down-to-earth person, and I just love him. And he always guides me to the best. And every time, every doubt I have, he is always available for clarifying all my doubts, all my queries, and he's best. And what is next? Any of your upcoming project you would like to share with us? Like any performances you have planned in future? That you have to wait. Okay, thank you so much and all the best. Thank you. पहली बार मैंने स्टेज पे इतना अच्छा यानी डांस किया। वो उधर तो गांव में तो करती थी, नागपुर जिले की हूँ सर मैं। यहाँ पे मैं MPC के क्लासेस करती हूँ ठाणे लक्ष्य अकेडमी में। बहुत अच्छा। और मैं हाँ ब्लाइंड में क्रिकेट खेलने जाती थी। अरे अच्छे कीपर थी, सबको सपोर्ट करती थी और बैटिंग अच्छी रहती थी। और हमारे नागपुर में योगा जनार्दन योग मंडल है, और वहाँ पे मैं योगा करती थी। कोरोना के टाइम में डेमो दिखाती थी, वो ऑनलाइन क्लासेस करते थे तो। और मयंक सर है ना, मयंक सर ने मेरा यूट्यूब चैनल निकाला था, वीडियो डाले हैं योगा का भी, वही उसी की तैयारी कर रही हूँ थोड़ा कभी सुबह के टाइम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज की परफॉर्मेंसेस थी सब लोग इमोशनल हो गए थे। जी, बस मैं भी इमोशनल हो गया, और मेरे लिए एक नया सीखने को मिला। फिर यहाँ खुल गई कि इसी जो परफॉर्मेंस जो था उन लोगों का, और ऐसे बच्चों को परफॉर्मेंस करना एक बहुत नोबल एक्ट है। उनके चेहरे पे खुशी आती है, बहुत नोबल है, बहुत ही नोबल काम है। और मैं संदीप सोपरकर सर और इंद्रानी मुखर्जी को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे नोबल कॉज में इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल को भी मौका दिया एक इसमें प्रेजेंटर बनने का। तो मैं ऐसे प्रोग्राम और भी हो, और ऐसे बच्चों को और भी एनकरेजमेंट मिले फ्यूचर के अंदर, ये मेरी इच्छा भी है, और इस सब बच्चों को मेरी शुभकामनाएं भी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो इतने सालों से जुड़ी है संदीप सर के साथ। संदीप जी के साथ 6 साल के ऊपर हो गया, और हमेशा उनका जो कॉज होता है डांस प्रोग्राम के, वो हमेशा स्पेशल रहा है। मगर आज तो मतलब सोने पे सुहागा जैसे सब, और हमारे सबकी आंखें भीनी तो हो ही गई, मगर मुझे ऐसे लगता है खुल गई कि हम कभी कभी कैसे सोचते हैं और कैसा सोचना चाहिए। और मुझे ऐसे भी लगा कि शायद मैं अभी उनसे बात कर रही थी संदीप जी से, कि कभी हम अंदर झांक के देखते नहीं, हमारे में भी बहुत सारी कमियां होती है, त्रुटियां होती है, जो कि शायद ये 21 में नहीं आती है, मगर कहीं ना कहीं आती हैं। अगर हम मुझे लगता है हमें ये जो इंक्लूसिव की बात हो रही है, हमें इंक्लूड होना है इनके साथ, उन्हें हमारे साथ नहीं, हमें उनके साथ इंक्लूड होना है। और ये ऐसे प्रोग्राम्स करते रहें, और मौका मिले तो हम हर जगह पे हम भी उनके साथ करते रहें। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू। आप लोगों के एक्ट यस, ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था संदीप सर के साथ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि संदीप सर ये हम जैसे लोगों को और एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म दे रहे, रियली रिस्पेक्ट।